डाटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। Okay, ठीक है. So guys, primarily Tableau is as I mentioned, it's basically a visualization. ठीक है. So अब क्या होता है in the world of analytics? Let me take you through basic analytics. ठीक है. So since you guys are very new to analytics, ठीक है. So here comes the analytics. ठीक है. तो यहाँ पे किसी भी एनालिटिक्स का जो इंडिविजुअल होता है, so their journey starts with these tools. ठीक है. either Excel और SQL और MS Access. ठीक. तो यहाँ पर हम प्राइमरली क्या करते हैं, we do the data crunching. ठीक है. so from the data we primarily build the dashboards. ठीक है. so when I say dashboard, so dashboard is primarily a combination of multiple KPIs. ठीक है. But ऐसा भी नहीं है, you simply go ahead and make your dashboard by using this tool. So you get the data in analytics. You can get the data in a CSV file, in a TXT file, in an XLS file, or it can be any database file as well. By the way, do you guys understand CSV file क्या होता है? No sir. Okay. कॉमा सेपरेटेड फाइल होती है सर, ये जो CSV होती है, जैसे हम कॉमा या स्पेस से सेपरेट कर रखे होते हैं उन्हें CSV। So primarily CSV stands for comma separated values. इसमें क्या होता है ना, so CSV में आपके जो भी variables होंगे and values होंगे, so your comma will be your delimiter or separator. So delimiter क्या होता है, primarily वो particular special character जिससे हमारी values जो है वो separate होती है. So in CSV file को अगर आप TXT में open करोगे, तो you will get to see that your variables and your values, obviously variables होंगे and then followed by the values, तो वो सारे separated by comma होंगे. ठीक है. यहाँ पे डेटा हमारा सबसे पहले क्लाइंट हमें ये शेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ CSV, TXT, XLS और एनी ऑफ द डेटाबेस. ठीक. उसके बाद हमारा सबसे पहला काम क्या होता है गाइस, इफ आई आस्क यू, दिस इज योर नॉलेज. ठीक है. जो भी आपके पास अंडरस्टैंडिंग हो, लेट्स से वंस द क्लाइंट शेयर्स यू अ डेटा. ठीक है. सो दे शेयर यू अ डेटा सोर्स. ठीक है. दिस इज प्राइमरली a data source. That data source can be your CSV, Excel, TXT or any of the databases. SQL होगा, MongoDB हो, कुछ भी हो सकता है. Once you get your data from the client, what is the next step which we have to do in analytics? नहीं आ रहा तो कुछ भी. क्या आवाज नहीं आई थी साफ, क्या बोला आपने? So once you got the data from client, so the data can be in any of the formats, right? So what is the next step which we do in analytics? पहले सर सबसे पहला डाटा अंडरस्टैंडिंग, मुझे अपने हिसाब से अंडरस्टैंडिंग करनी, फिर उसे उस हिसाब से प्रेजेंटेशन करना है डाटा का, फिर उसके हिसाब से तो मॉडल बनाना होगा मुझे आगे. सबसे पहले सर डाटा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, किस टाइप का डाटा है, किस फील्ड का डाटा है, क्या है. फिर उसके बाद सर मुझे उसमें जो भी उसमें डाटा में जो मुझे अपने मॉडल के लिए प्रिपरेशन करनी कि उसमें कौन सी कमांड्स लगानी, क्या करना, उस चीज को फिर बनाएंगे. फिर उसके बाद मॉडल बनेगा ना सर. करेक्ट. जो मुझे सर इतना ही पता था, जो पता था ये आपको सही पता है. फिर इसके बाद मैं अपने डाटा का मॉडल बनाऊंगा, फिर उसका वही प्रेजेंटेशन होगी. बस इतना ही सर पता अभी तो फिलहाल. Cool. So primarily, as Avina mentioned, guys, so once you receive your data, so the next step comes wherein we will have to understand the data. ठीक है. अभी अगर हम कॉल पे देखें, some of us are BTech graduate, some of us are BTech biotech. Now let's suppose, imagine we are all working in a team for a healthcare company. ठीक है. अब healthcare का जो data होगा ना, so it will primarily have 60-70 columns और variables in. तो हो सकता है हम सब BTech है, biotech जो let's suppose वो पास नहीं दे रहा है, so she is BTech biotech, so वो कुछ फील्ड समझ भी पाए, but for us it will be very difficult to understand each of the fields. इसलिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें डेटा को अंडरस्टैंड करना होगा. In any of the tools you work on Excel, you work on Tableau, Power BI, SAS, Python या R, किसी पे भी अपन काम करेंगे. The next step is once you receive your data, you will have to primarily understand your data. अब उस डेटा अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें क्या होता है, उस डेटा अंडरस्टैंडिंग के लिए, so along with the raw file, client shares a DDS or a data dictionary file.
ठीक है। अब होता क्या है कि दिस प्राइमरली द DDS स्टैंड्स फॉर गाइस डेटा डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिकेशन। ठीक है। सो दिस प्राइमरली ये जो फाइल्स होती है, सो दिस फाइल डिस्क्राइब्स द मेटा डेटा। सो मेटा डेटा इज नथिंग, इट्स योर इन्फो अबाउट योर डेटा। सो आपके जो भी डेटा में जितने भी वेरिएबल्स होंगे ना, उन सबकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है इन दिस पर्टिकुलर DDS और दिस डेटा स्पेसिफिकेशन और दिस डेटा डिक्शनरी फाइल। ठीक है। अब इसके बाद जब वंस वी अंडरस्टैंड ईच ऑफ द फील्ड्स व्हिच आर अवेलेबल इन आवर डेटा सोर्स, देन वी गो अहेड एंड वी डू दी लेट्स सपोज फील्ड आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। कौन सी फील्ड्स है जो कि हमें अपने एनालिसिस के लिए चाहिए और कौन सी फील्ड्स है जो कि हमें अपने एनालिसिस के लिए नहीं चाहिए। So now these are some of the mandatory steps which we have to do into analytics. ठीक है। It's not that कि कोई भी डेटा आया डायरेक्टली you jump onto your tool like Excel या Tableau या Power BI and you start building your reports. So I'm just letting you know the basics of the analytics. Analytics में कोई भी जो काम होता है, how, what are the different steps involved. Once you do the field identification, then we go ahead and we try to build our master data. ठीक है। So master data क्या होगा? So primarily, let's suppose you are working for a company, Hindustan Unilever, which is spread across globe. ठीक है। अब वहां पर जो फाइल्स आएंगी वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन की आएंगी, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में आएगा। कहीं पे डेट फॉर्मेट होगा पहले DMMYY, कहीं पे मंथ पहले होगा, कहीं पे ईयर पहले होगा। सो वी प्राइमरली हैव टू फॉर्मेट आवर डेटा। ठीक है। वो वैसे ही कभी कहीं पर क्या होगा, जो यूएस की फाइल होगी उस पे जो अमाउंट्स होंगे दैट विल बी इन USD, इंडिया वाले INR में होंगे, यूरोपियन करेंसीज यूरोज में होंगे, राइट। सो यू विल हैव टू डू द नॉर्मलाइजेशन। ठीक है। बिकॉज ऑब्वियसली जब हम लेट्स सपोज जब हम आउटपुट बनाएंगे as per the alignment with client, so we will obviously convert all the values, let's suppose जो भी sales value है, profit है, discount है, we'll have to convert them into single currency। ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि हम यूएस वालों को यूएस में रखेंगे, INR वालों को INR में, एंड देन विल गो अहेड एंड मेक आवर रिपोर्ट। So primarily your report should have the values in a single currency. Then you will work on the missing values। ठीक है। Duplicate values, ये सारी चीजें हम करके then we primarily we try to duplicate, and then what we do also we date formats भी हमें करने होते हैं। So primarily after doing all these steps, our master data gets ready. Once this master data is ready, then we obviously we use tools like Excel, Tableau या जो भी हमारा है, जो भी client wants us to use, we will use that tool to get the reports being generated. अब now in the world of analytics मैं आपको ये बता रहा था कि the tools like Excel हो गए, ठीक है, या फिर मान लो SQL हो गए, MS Access हो गया, so these are primarily your basic analytical tools wherein we prepare the data insights। ठीक है। so data के basis पे आप insights बनाते हो। Now tools like Tableau and Power BI, so these are your primarily your visualization tools। so when it comes to visualization, so visualization में हम क्या करते हैं, नंबर्स की जगह, सो व्हेन आई से डेटा इनसाइट, सो प्राइमरली हमारे यहाँ पे जो इनसाइट जनरेट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स होता है। ठीक है। सो व्हेन आई से डेटा विजुअलाइजेशन, तो इसमें जो भी होगा इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स, यानी कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर डेटा। ठीक है। सो दिस वी प्राइमरली डू इन टूल्स लाइक Tableau and Power BI or ClickSense or SPSS। And when your data is very large, then obviously for it, Excel, SQL, Access can't, they can't support huge data. So for that we have tools like SAS, R or Python, जो कि large data या big data को we can obviously perform the calculations and computations and create our insights. But for visualization, obviously nowadays companies are using Tableau, Power BI, and obviously are the champions or the leading players in the visualization. But as we only have Tableau, Power BI, we have tools like ClickSense, we have tools like SPSS, which are very, let's say, limitedly used across the globe। So Tableau, Power BI is the mostly used in the visualization world। कुछ समझ में आया या कुछ समझ में नहीं आया? आया आ गया। लेकिन सर मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, जो हमें क्लाइंट रॉ डेटा देंगे, पूछो आप पूछो। और क्लाइंट में डेटा देते हैं
तो वो सारी फॉर्म में किस फॉर्म में होता है, जैसे एक्सेल की फाइलें होती है कि एसक्यूएल की फाइल होती है, नहीं, आपका सीएसवी जो फाइल होती गुड क्वेश्चन, आपका जो वो होता है ना, क्या कहते हैं, जो डेटा निकल के आता है ना, so है? हाँ, primarily it can lie on any of the system. It can be any of the databases, it can be any of the ERPs like हाँ, SAP, Oracle, हाँ, Ariba, Bino, कुछ भी हो सकता है. So most of the हाँ, times you will see your data coming in three formats only: Excel, CSV and TXT. ठीक है? Now ठीक है, most of the times इसमें भी again पहले तो Excel, CSV और TXT होगा, जिसमें से again for most of the times you will find in CSV और TXT. क्योंकि Excel also a limitation है कि 10,48,000 records ही Excel can hold. CSV और एक्सेल में यही फर्क है गाइस कि योर CSV फाइल ऑब्वियसली अगर आप उसको एक्सेल में खोलोगे ना, सेम टू सेम एक्सेल जैसा ही दिखेगा, बट योर CSV फाइल कैन हैव ओनली वन शीट. सो प्राइमरली यू अंडरस्टैंड, राइट? दिस इज एन एक्सेल वर्कशीट, ठीक है? सो इट कैन हैव मल्टीपल शीट्स इन इट, राइट? शीट 1, शीट 2, शीट 3. अब लेट्स सपोज करो मैंने इसको शीट 2 पे जाके इसको मैंने सेव एज कर दिया अगर CSV फाइल, ठीक है? तो प्राइमरली क्या होता है कि CSV फाइल इट ओनली हैज वन शीट, इट डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल शीट, ठीक है? So you always have to be very cautious when you are working into analytical projects. कि अगर आप किसी Excel फाइल को CSV में सेव कर रहे हो, make sure that Excel file is having only one sheet in it. If this Excel file is having multiple sheets, यानी कि sheet 1, sheet 2, sheet 3 तीनों में डेटा है, and then you save this, तो इसमें जो CSV फाइल बनेगी, it will have only one sheet, and there is no way to retrieve the remaining two sheets. ठीक है? So now, Abhinav, just to answer the question, so for most of the time, the data comes from these ERPs or from the databases in the form of Excel, CSV or TXT only. ठीक है? Clear? Yes, Abhinav dropped that. यस सर। Okay. और किसी को कोई क्वेश्चन अभी तक? So this is very basic with respect to your analytics world. ठीक है कि analytics world में कैसे काम होता है? Now one of the mandate is obviously since we have to learn Tableau and the complete session will be practical based, so you need to have Tableau installed in your system. So do you guys have Tableau installed in your system? No, sir. Okay, none of you have, right? No, sir. ठीक है. So let's do that only. Let's install the Tableau. So now there are three ways of getting the Tableau installed in your system. अभी ये वाला मत करना. The first one is obviously you say simply write in Google Chrome do Tableau desktop download. तो यहाँ पर क्या होता है ना, Tableau gives you a 14 days trial version. ठीक है? Now obviously since it says 14 days trial, so primarily you simply have to feed in some of your details here and you can download the free version, but this free version will get expired after 14 days. ठीक है? So इसलिए इसको अभी नहीं करना, but then Tableau provides us the Tableau का license version free for 14 days across the globe. Anyone can use it. The next method is obviously which everyone uses it for training purpose is you can get the Tableau public downloaded. ठीक है? Now Tableau public is something which is free of cost, which Tableau team has made available primarily for the training and the learning purpose. It only has certain limitations, very few limitations, which obviously I will take you through the sessions, through the upcoming sessions. इसमें क्या होता है ना कि you can't import and export your reports. So primarily जो भी आप इसमें Tableau में बनाओगे in Tableau public, you won't be able to save it in your local system. But that's obviously not a limitation for while we are learning Tableau. ठीक है? Apart from that, there is no limitation in with comparison to Tableau desktop license version and the Tableau public downloaded version. ठीक है? दोनों में से बिल्कुल ही सेम है. There is no limitation with respect to functionalities and learning also. It's just that whatever reports you will create, we won't be able to save them in our local system. अब उसको कहाँ पे सेव कर सकते हैं? You can save them if you want to save them. You can save them onto Tableau public server. ठीक है? So now request all of you guys simply go in your Google Chrome and type in Tableau public download. Yeah, let me ping this. Simply ping me this. You simply click on this link. It will take you there all the. So I have just pinged you guys a link. This link पे click करो. मिल गया लिंक? यस सर। क्लिक कर लो उस पे and
ओपन हो गया, डाउनलोड द ऐप जैसे लिख के आ रहा है, कर दूं डायरेक्ट सीधा? हाँ, now once you will be on this page, click on download the app. या हो गया ये तो सर। वो मांग रहा है कुछ रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, हाँ, वो सब डाल दो, बिजनेस। वो सब डाल दो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बिजनेस ईमेल, दिस ऑल कंट्री। इंफॉर्मेशन, कंट्री डाल दो, and then you click on download the app. सारे इसी पेज पर है ना? Okay. कुछ हो रहा है डाउनलोड? हाँ हो रहा है सर। उपासना श्रेष्ठ आप लोगों का हो रहा है? यस सर, वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ओके, ठीक है। सर बिजनेस ईमेल में अपना खुद का ही तो ईमेल डालना है। हाँ, नहीं ले रहा क्या? अपना ईमेल आईडी डाल दो, सिंपल है। ठीक है सर। I believe one exe file must be being downloaded, है ना? हो रहा है सर download? अब इस पे क्रिएट एन अकाउंट करना है क्या? नहीं तो सर अब मैंने वो नेक्स्ट स्टेप किया ना, ये मतलब कि रजिस्ट्रेशन के बाद, तो उसमें क्रिएट एन अकाउंट पे करना है क्या क्लिक? ये कर लिया हमने, then you will go and click on download the app. बस ये डाउनलोड स्टार्ट, ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। नहीं हुआ क्या ये? क्रिएट अकाउंट क्यों करेंगे अपन? You fill in those 4 details and then if you want you can share your screen and I can guide you here. Because this is one of the mandate to have. You won't have the Tableau, you won't be able to practice. सर हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है। सबका हो रहा है डाउनलोड? हाँ जी सर, मेरा हो गया, इंस्टॉल हो रहा है मेरा। गुड है। इंस्टॉल सीधे स्टार्ट कर दूं मैं, या आगे पहले कंप्यूटर टैब करके? अभी आप स्क्रीन शेयर कर लो यार, इससे समझ में नहीं मैं आएगा। कर दे मैं कर दे Okay, let me stop sharing it. अब करो। दिख रहा ना सर स्क्रीन? Click on I have read वाला पे check mark को, I have read and accepted terms of license. ओके, नीचे वाला ये डू इसको नॉट सेंड पाउडर। नहीं, इसको मत करो। Stop. यस Yes कहाँ आ रहा है? तो रहा है इंस्टॉल। यस करना ना, ऐसा तो यस करना होगा। हाँ, यस कर दो। वो आपको आ रहा होगा, मुझे दिख नहीं रहा है। अच्छा अच्छा।
हो गया सबका यहाँ तक? सर मेरा तो अभी प्रोसेस ही दिखा रहा है इंस्टॉलिंग में। अब कोई हो नहीं रहा है कोई थोड़ा। नहीं, सिस्टम टू सिस्टम इट वेरीज, इट्स ओके। ये आ गया सर ऐसा कुछ। कूल, दिस इज योर टैब। ठीक है, आई मीन maybe कर दूं? you can stop sharing. सर एक डाउट था। Go ahead. ये टैब्लू वर्सेस पावर बीआई, व्हिच वन इज बेटर? Very tough question to answer. See, because the reason being Tableau has been into market for almost a decade now, ठीक है, more than a decade. या करेक्ट। Power BI came into picture some 2-3 years back, okay, and obviously Microsoft has launched it, and it is doing very good in the market, and यस। it is going too good with respect to the cost also. While Tableau is very costly, Power BI is very cost effective, okay. But then there are certain set of let's suppose clients primarily pertaining to banking, healthcare, which wants Tableau on, because the security is very high in Tableau. Eventually, Tableau that's makes a Tableau a differentiator, मतलब a competitor into the market, again, or a differentiator. Eventually, they know the Power BI is doing very good, but then also they have not reduced their prices. Because जहाँ पर भी जिन भी client accounts के लिए ना, the data is let's suppose a high priority, they're still working on Tableau only. They are not transitioning to Power BI. But then companies which are, let's suppose retail companies or primarily manufacturing only, so they are primarily using Power BI. Power BI also doing a good competition, giving a good competition to Tableau. But then Tableau is also coming up with new functionalities and everything. दोनों अभी at the peak ही चल रहा है. लेकिन सर मैं एक चीज पूछना था कि इसका दोनों जैसे टैबलू और पावर बीआई का वर्किंग स्टाइल तो थोड़ा बहुत सेम होगा कि मतलब बहुत ही आपने अगर टैब good question, बहुत ही same है. Eventually, if you go for any company, so let's suppose if you say I was working on Tableau, I was working on Power BI, they have requirement for vice versa, right? So you were working on Tableau, they have requirement, they will consider you because the interface is only different. Primarily the syntax varies, ठीक है ना? But वहाँ पर भी हमें charts बनाना है from a basic chart like paragraph, from pie chart to donut or waterfall. वहाँ पर भी हमें visualization charts ही बनाने हैं. दोनों का अपना अपना syntax है, दोनों के अपने अपने facilities है. किसी का top में, किसी का left में दे रखा है. That is what. So which eventually someone who has worked on Tableau or Power BI is very easy for them to learn or grasp those things. Because देखो यार, at the end of the day ना, you guys must be aware data analytics जो है ना, it's not about your Excel, Tableau, Power BI, SAS, Python, ठीक है ना? It's more about your how good you are in problem solving. तुम्हारा algorithm building जो skills होता है ना, right? Considering you guys are BTech graduates, तो वो जो हमने BTech में पढ़ा था ना कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम हमें बनाना पड़ता है, राइट? वो जो स्टेप्स हमें बनाना है ना, दैट वी नीड टू डिफाइन, दैट वी नीड टू स्ट्रक्चर. फिर तो वो टूल है कि अगर एक्सेल पे कर रहे हो तो एक्सेल पे ये फंक्शन यूज करना है, टैब्लू पे ये फंक्शनलिटी यूज करनी है, पावर बीआई पे या सास पे ये यूज करना है. सो यू नीड टू बी गुड इन योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड योर डेटा एनालिटिकल स्किल्स. देन दिल टूल विल हेल्प यू टू बिल्ड दोस. तो वो एल्गोरिदम तो हमें खुद से बिल्ड करनी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हमारे अंदर होनी चाहिए. दैट इवेंचुअली कम्स बाय टाइम, वो भी किसी को ऐसे नहीं आ जाता है. सो द मोर एंड मोर यू वर्क, द मोर एंड मोर इंटरेस्ट यू विल गेन, द मोर एंड मोर कॉन्फिडेंस. ठीक है, इसीलिए जस्ट अ रिक्वेस्ट कि जो भी मैं टैबलू में कराऊंगा, डो नॉट थिंक कि पहले टैबलू कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या करा रहे हैं, फिर अंत में जाके करेंगे. इन पैरेलल आफ्टर द सेशन इज कंप्लीटेड, बिफोर वी कम फॉर द नेक्स्ट सेशन, मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस एट योर एंड. मेरे लिए तो चीजें बहुत ही आसान है. आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर ऑलमोस्ट पास्ट 6 to 7 years. ठीक है, लेकिन तो आप जब देखोगे बड़ा आसान लगेगा, बट इवेंचुअली व्हेन यू विल वर्क एट योर एंड, देन यू विल गेट टू नो द रियल पेन एरियाज.
So just a simple request, keep put in your effort with respect to whatever is being taught in the session. Before the next session comes, you should come practicing the earlier topics. Okay. Now, having said that, I believe Tableau must be installed on everyone's system. Is it or not? अभिनव का तो हो गया, उपासना and Festa, is it working? Is it did Tableau got installed?